Assalamu alaikum everyone. Welcome to our channel Learning with Aisha. Our today's topic is going to be very interesting as we are going to discuss the Government of India Act 1919, which is known as Montague Chelmsford Reforms, and in short form we call it Mont-Ford Reforms 1919. So let's start our topic, and first of all we'll get an idea about the background of it or the introduction of these reforms. In 1917, Lord Montague, who was the Secretary of State at that time, along with Lord Chelmsford, the Indian Viceroy, visited India. Both of them held meetings with political leaders. They met government and non-government officials. And finally, after meeting with all of them, they presented or they introduced a new system in India. Previously, they rejected Congress League system. This system was set up by Congress and Muslim League. That's why it is jointly known as Congress League system. So the system of diarchy or diarchy was introduced. They jointly prepared a report and presented it to the British Parliament. The report was approved by British Parliament and it became the Act of 1919. Commonly, it is known as Montague Chelmsford Reform. The Indians were unhappy with the Act of 1919 and they oppressed it. In our next slide, we will be discussing why this act was not favored by the Indians and what benefits were given to the Indians through these reforms or through this act. Now this slide shows the main features of the Government of India Act 1919. We can clearly see that how the Indian Legislative Council was divided into two houses, upper house and lower house. Diarchy system was introduced at provincial level. Communal representation was expanded to all the minorities. Further, in the next slide, we'll be explaining each and every point in detail. The Central Legislative Council was replaced with bicameral legislative. Bicamerals means two different parts. Bi means two. So there would be two parts in the national parliament. Number one was the Council of State, which is known as upper house. The second one was the Legislative Assembly, which is known as the lower house. As far as the seats of these two houses are concerned, so in the Council of State, 60 seats were given and 33 of them were elected seats. Means के total 60 seats उनको दी गई थी, जिनमें से 33 seats जो थी वो elected seats थी. The Central Legislative Assembly, which is known as the lower house, was given 145 total seats. One of three of them were elected and 32 of them were Muslim seats. अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि टोटल सीट्स जो भी दी गई, चाहे वो काउंसिल स्टेट को दी गई या लेजिस्लेटिव असेंबली को दी गई, इन दोनों स्टेट्स में जो मेजॉरिटी थी वो इलेक्टेड थी. जो ब्रिटिश के पास थी, या जिसको आप कह सकते हैं कि अथॉरिटी अभी भी ब्रिटिश के पास थी. सो हमारे पास अपर हाउस में 33 इलेक्टेड सीट्स आ रही हैं आउट ऑफ 60. लोअर हाउस में 103 सीट्स आ रही हैं आउट ऑफ 145. Both of these groups were allowed to talk about the budget and to make new laws, but the Viceroy had the power of veto. It means that he can pass new laws and he can cancel the decisions as well. So Viceroy जो कि appointed by British government था, मेन राइट्स तो उसी के पास थे कि वो किसी भी लॉ को पास भी कर सकता है या फिर उसे वो कैंसिल भी कर सकता है. Then we'll be talking about our next task, that is diarchy system. It was introduced at provincial level. Previously हमने जो बात की वो हमारी central legislature की थी. अभी हम बात कर रहे हैं provincial legislature की, जहाँ diarchy system, जिसको आप diarchy भी बोलते हैं, introduce करवाया गया. Where some powers go to elected Indian leaders and some to British appointed leaders. It means कि
दो तरह की गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाएगी, एक वो जिसको ब्रिटिश लीडर्स लीड कर रहे थे, दूसरी वो जिसको इंडियन इलेक्टेड मेंबर्स लीड कर रहे थे। अब इस सारे प्रोसेस में रिजर्व्ड सब्जेक्ट और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट का नाम दिया गया इन दो गवर्नमेंट्स को। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में लॉ एंड ऑर्डर है, फाइनेंस एंड टैक्सेस हैं, जजेस एंड कोर्ट्स हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है और सिविल सर्विसेज है। Now all these were the main authorities or the main rights which were given to British officials or British governors. Whereas when we talk about the transferred subject, जो Indians को दिए गए, Indian governors को दिए गए, so we have education, health service, agriculture, local government, public works, etc., etc., etc. The thing is that अगर हम इसकी अच्छाई की बात करें या benefit की बात करें तो yes, it was a great benefit for the Indian that somehow they were now the ministers, they were ruling these subjects or they were empowered in these subjects. But the major powers were still with the British government. किसी भी सूरत में, किसी भी लॉ की सूरत में या कोई भी डिमांड फुलफिल करने के लिए फाइनली ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैड टू डिस्कस्ड विद द रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, और रिजर्व्ड सब्जेक्ट की परमिशन के साथ और उनके अप्रूवल के साथ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स कुछ भी कर सकते थे, अदरवाइज उनके पास लॉ मेकिंग या फाइनल पावर या फाइनल डिसीजन नहीं था। There could be a 4 marks question related to dietary system. आप इस सिस्टम की बेनिफिट्स भी बता सकते हैं और आपका क्वेश्चन इस सिस्टम के ऑपोजिट भी आ सकता है, इसकी फेवर में भी आ सकता है, तो यू कैन डिस्कस इन बोथ वेज। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स हैं जिनको अलाउ किया गया कि वो इस बार किसी भी लॉ को डिस्कस कर सकती हैं। एडवाइजरी राइट्स वर गिवन टू प्रिंसली स्टेट्स और द प्रिंसेस, लेकिन यहाँ अगेन विल बी डिस्कसिंग द सेम थिंग कि दे वर ओनली द एडवाइजर्स, दे वर नॉट द लॉ मेकर्स, दैट्स वाई दे वर नोन एज टॉकिंग शॉप। वोटिंग राइट्स इंक्रीज किए गए 2.5% से अब 5.5% तक। द प्रॉब्लम वॉज दैट ओनली एजुकेटेड एंड वेल्दी इंडियंस वर अलाउड टू वोट and they did not give any right to women for voting. So दोबारा जब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को क्यों नापसंद किया गया, तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीज़न कि उन्होंने राइट्स इंक्रीज तो किए 2.5 से 5.5 कर दिए, बट स्टिल 5.5 वॉज अ वेरी लो नंबर। जब आपकी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो मिलियंस में, तो उसमें आप इतना छोटा सा एक हिस्सा इंडियंस को दे रहे हैं वोटिंग का। This act also shares that new reforms will come after every 10 years. Muslims and Hindus will have separate electorates. तो separate electorates इन दोनों पार्टीज़ को, दोनों कम्युनिटीज़ को दे दिए गए। So ये था हमारा आज का टॉपिक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, Mont-Ford Reforms और Montague Chelmsford Reform। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स. Like and subscribe the channel, and please do tell us what other topics you want us to make the videos on. Thank you so much.